So it's my second day. Hey, hello. So it's my third day in Sarajevo. Now I'm heading toward the city central to get some breakfast, but it's time for lunch now. So yeah, I will do the lunch now, and again I will show you the same thing because the third day in Sarajevo, and almost I have completed everything. I have not visited the museums and stuff like that. I have not went to the mountains because mountain is pretty far from here. So when I will go to Mostar tomorrow, so I will update you about the Mostar. Mostar is beautiful. Mostar बहुत खूबसूरत है. और उसके बाद क्रोशिया जाना है तो Dubrovnik, it's kind of a place for the prince. It was the main spot, like what happened in the war. Like there are big walls like that used to protect the city. So if you have watched Attack on Titans, it's the same. It gives the same vibe. And if you see the Balkan countries, Balkan countries, it's beautiful. And if you are attracted toward like mountains and stuff like that, mountains पसंद है या रिवर साइड पसंद है या हिस्ट्री पसंद है, तो यहाँ आना ज़रूरी है. यहाँ आना तो मस्त है. फिर बाकी हो सके तो सिटी सेंट्रल में घर लेना पॉसिबल हुआ तो, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है. सही बोल रहा हूँ भाई. कोई नहीं, यंग है, जवान है, तो इतना चलना कोई मुश्किल नहीं है. ये देखो थर्ड डे है सरायवो में. आज अगर हेयर कट कहीं से हो गया तो हेयर कट कराएंगे, बाकी चलते जाएंगे. अल्लाह मालिक है, जहाँ पहुँच गए. एक्चुअली मसला ये है कि बहुत दूर जाना पड़ता है यहाँ से. कम से कम आधा घंटा कम से कम लग जाते हैं, या 15-20 मिनट, जो हिसाब से आप चल रहे हो. पीछे कार आ रही, साइड होना पड़ेगा. बहुत साइड हो गया. यहाँ निकल पाओगे? निकल गया हमारा भाई स्लिम है. धूप बड़ी तेज़ है, चुभ रही है. बाकी ये एरिया बड़ा प्यारा है. वो एक चीज़ नोट करो, वो देखोगे तो तुम क्रिश्चियन का सिंबल है ये मॉस्क है, ये मीनारेत है. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें बोस्निया देखना है, क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें पीस देखना है, यूनिटी देखना है रिलीजन्स के दरमियान, लाइक जीव्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए एंड मुस्लिम्स हो गए, अगर तुम्हें यूनिटी देखना है एक्चुअली, तो ये 3 रिलीजन के लोग इधर रहते हैं. और बोस्निया एक परफेक्ट जगह है अगर तुम्हें ये चीज़ के बारे में जानने हैं. लोग पीसफुल है, यहाँ के लोग अच्छे हैं मैं कहता हूँ. और खाना सस्ता है, रूम सस्ता है, रहना सहना सस्ता है, रेंट सस्ता है. और इफ़ तुम प्लान कर रहे हो दूसरी कंट्री, देन टू आई विल सजेस्ट सम बाल्कन कंट्रीज़. अल्बानिया जीडीपी डाउन हो गई है, लेकिन अगर तुम्हें बाल्कन कंट्रीज़ में चूज़ करना पड़ा तो मैं कहता हूँ कि बोस्निया इज़ द बेस्ट एंड definitely you should visit it one time. You should take a move, like if you love it, if you love the European side, you need to be in Europe, but it does not come under the Schengen countries. So when you come to Europe, it is Europe. That guy said me blogger. So when you go when you come to Bosnia,
It's like you are coming to Europe, but not into a Scandinavian country. So basically, you will not be able to freely visit other Europe countries. So, but I would say you can easily get the e-visa and stuff like that. So give it a try. Come to Bosnia, and it will be good once you visit it here. And this is the view from here. It's kind of some flag about Bosnia, and one more flag. I don't know what it is. Like it's kind of clan and Scott type of thing, but I think so. Here was one of the prince. I think so, that was not the guy who was assassinated here. वो तो बंदा नहीं है जो assassinate हुआ था, but हाँ, यहाँ का सीन ये है ही उस चीज़ के लिए खुला तो है. वहाँ उसकी फ़ोटो बनी है. That he has the photos, and his name is like Carlo, Cargis, something like that. I don't know what it is, but this is the stairs. I'm coming here for like 5th to 6th time. It's amazing if you see that. The view is amazing actually. Look at this. I will stop for a while so you can just adore it. Yeah. So actually, I have my best time in Bosnia, like Sarajevo. If you are attached to like small countries, small cities, a peaceful vibes, a walkable thing, like there is not much to see in Bosnia, but you can see about the World War, about the museums, about the resistance, about the tunnel, the resistance tunnel, and yeah, and the people, I would say, and the food. Chavapi, you need to try that. Other than that, look at the vibe. I mean, the temperature, the weather is good here. It's not too bad like the weather is not that bad like comparing to another country. If you had visited Turkey once, then I would say it's similar to Turkey, but you should still give it a try. And actually it was under Ottomans few years back, not few years back but few decades back, so until the fall of Ottomans, but they still have their architecture and their mosque in Bosnia. So like if you see there are lots of mountains, and if you see there are houses on the mountains, like mountains पे घर है, तो वैसे ही तुम्हें तुर्की में मिलेंगे रोड्स वही डिफ़िकल्ट, वैसे ही ऊपर जाने वही डिफ़िकल्टी में ऊपर जाने. ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इफ़ तुम्हारा बजट लो है, कहता हूँ क्योंकि तुर्की अब एक्सपेंसिव हो चुका है. अगर तुम वहाँ विज़िट कर रहे हो तो तुम्हें पर डे कुछ 75 पाउंड्स कैरी करना पड़ेगा, और एकोमोडेशन की अलग बात है. तो यहाँ बुजुर्ग बड़े आए थे सर पे, पर कोई नहीं, हमें तो व्लॉग्स बनाने हैं. और अगर तुम देखो तो टूरिस्ट भी यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग अट्रैक्टेड है वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है, स्टफ लाइक दैट. तो मैं कह रहा था कि यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा है क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर से अट्रैक्टेड है, उनको हिस्ट्री जानना था, या तो ये सिमिलर है तुर्की से, तो लोग देख ले, लेकिन अब मेरे को शर्म नहीं आती. ये छोटी सी मार्केट है, लोग हैं यहाँ, छोटे छोटे स्टॉल्स रहते हैं. देयर आर स्मॉल वेंडर्स आउट हियर, so you can purchase anything and it's not that expensive. You can buy it like and if you are converting your like euros into BAM, then it's like 1 euro is equal to 2.5 BAM something. So see you later.
currently crossing the road. I just ate and came back. So this is the church, and I think so this time I need to take in the morning, but I have no idea about it. So Copa do Queijo. I think so this time I need to take in the morning, but this is the church, and I think so I need to sit in the front. So I will be going into front, and from there I will go to the mosque, inshallah. You can see the tram is funny, man. Like they're drawing about it, and there's a bus, the transportation. Even the transportation is good, no doubt. Transportation is good in Bosnia. Transportation is good, and I think that there is something out there, but I don't want to go. So this is the road. I think that there is a museum, Siege of Sarajevo. Ah, really? The longest siege of a capital in the history, 9 to 21 hours. Combined ticket for 2 landing Moscow sieges. So I think so it is closed, even though it is said it will be open from morning 9 to night, like midnight 9. So even though after that it is closed, इसके बाद भी close है, क्या कर सकते हैं. ये रहा हमारा व्यू, वो बार्बर शॉप. Should I get the haircut? I do need to get the haircut. Current inside the barber shop to get the haircut. So see you later. So I actually got the haircut done. Got the haircut done. Now going to the mosque for the prayer. अब मस्जिद में जाना पड़ेगा, नमाज का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं मस्जिद डायरेक्ट. I know बाल सेट होने 4 दिन जाएगा. It will take 4 days to fix my hair, but चलते जाते, और क्या, जो होगा देखा जाएगा. यहाँ कुछ लोग बैठे हैं. कुछ लोग बैठे थे वहाँ, क्या पता क्या करूँ. बाकी चिल सीन है. हम मस्जिद चलते हैं, मार्केट से होकर फिर एहराम बाय करना है. वी विल बाय एहराम फॉर दी उम्रा. सो आई फाउंड द शॉप. इट्स इनसाइड द हिस्टोरिकल मॉस्क. सो या, actually yesterday I could not buy it because the withdrawal limit from my bank was full. So let's go to the mosque now because it's the time. Let's go. This is the view. You can see the view. It's amazing, right? This is the synagogue, and it's open. You can see the Jews symbol.
inside this synagogue. I think the camera is not allowed. Oh, what's the case? You can see the view inside this synagogue. Actually, I don't want to go inside, but I think so. I should go inside, and I don't know should I or I not. But feels like I should go for the mosque for the prayer right now, and after that I should come to the synagogue because it will be open for a few times. Like I think so till 5, so I should go for the mosque first. Let's go to the mosque first because prayer first, then visiting the place. तो नमाज पहले आती है, घूमना फिरना क्या होते रहेगा. लेट्स गो. सो ये है मार्केट का हिस्सा. ये मार्केट की तरफ जाता है. ठीक है, मार्केट की तरफ जाता है और मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ मॉस्क का. पब्लिक हट रही है. आगे से भी आता है, लेकिन मैं तुमको यहाँ से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सूट करता है. और यहाँ से जाके लेफ़्ट जाना है. हालांकि तुमको मीनारेट पहले ही दिख जाएगा, दूर से ही दिख जाएगा. तो यहाँ से लेफ़्ट, यहाँ थोड़ी सी ड्राइंग्स है. तो ये छोटी सी गली है. इट्स अ स्मॉल नैरो रोड heading toward the mosque, the historical mosque, like which was built in 1526, and you can see it is like in Ottoman style because Ottoman built it, as I said in my earlier videos. So I think so the prayer time has started. So let's go inside. This is the entry point of the historical mosque.